Assalamu alaikum, my dear class 5. How are you all, my little ones? I hope you all are enjoying your holidays. So today we are going to do an activity which is regarding grammatical concepts, and it's on page number 12 and 13 of your workbook, unit number 1, and activity of learning grammar. So dear students, what we are going to do today, we are going to learn about the punctuation, the activities of punctuation. एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप इसके बाद क्या सीखेंगे, इससे क्या आपको नॉलेज मिलेगा, वो ये होगा that you will come to know that how to use the punctuation marks in the given sentences, and you can easily punctuate the simple sentences. You can learn the importance of those punctuation marks in your daily life or in your daily writing. Okay, so आपने इनके concepts को अच्छी तरीके से याद रखना है. So, what are punctuation marks? What actually are they? They are known as the symbols like full stop, comma, question marks, exclamation marks, which are used in writing to separate the sentences and to clarify the meaning. जैसे अब full stop है, question mark है, exclamation mark है, capital letters हैं, inverted commas हैं या commas हैं, ये आपके क्या है, पंक्चुएशन मार्क. फॉर सपोज अगर मैं आपको एक ऐसा पैराग्राफ दे दूं जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कैपिटल लेटर है, ना फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन है, ना इन्वर्टेड कॉमास है, ना कॉमास है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड द सेंस ऑफ दैट पैराग्राफ? आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है, कहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए. तो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, दे हेल्प यू टू लर्न द सेंस ऑफ द सेंटेंसेस एंड लर्न द मीनिंग ऑफ देम. ठीक है, जब तक पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे आपको सेंस नहीं समझ आएगी. तो पंक्चुएशन मार्क्स की इंपॉर्टेंस आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है. ठीक है, okay my students, now there are some rules and regulations while doing and dealing with punctuation marks. So what are the rules? Mark full stop at the end of every sentence. It is very much common that whenever you write a sentence and you just complete it, you just have to mark the full stop at the end of that sentence. For example, there is a short sentence, my name is Ali. After that you have to mark the full stop. इससे क्या पता चलेगा कि भाई सेंटेंस खत्म हो गया. ठीक है. सेकेंड रूल इज राइट कैपिटल लेटर्स आफ्टर फुल स्टॉप. अब जैसे एक लेटर खत्म हो गया, एक सेंटेंस खत्म हो गया, आपने फुल स्टॉप डाल दिए, अब आफ्टर दैट फुल स्टॉप यू हैव टू राइट अ लेटर विच शुड बी इन द कैपिटल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अलीना इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप. आफ्टर फुल स्टॉप यू आर जस्ट राइटिंग अनदर सेंटेंस, शी इज वेरी ब्यूटिफुल. तो शी एस जो है, शी का वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. Third rule is regarding question mark. You have to write question mark at the end of every sentence where the question is asked. ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, उसके अंदर आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएं तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगी उसकी. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ, तो इसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है ताकि पता चले ये क्वेश्चन हो रहा है. ठीक है, ओके. then there is exclamation mark. what exclamation mark क्या होते हैं? जहाँ पे आपको कोई एक्साइटमेंट शो हो रही हो या कोई ऑर्डर आपको दिया जा रहा हो उस सेंटेंस के अंदर, तो आपने वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ सरप्राइज. तो दिस इज द फीलिंग एंड इट इज़ एन एक्सप्रेसिव फॉर्म रिगार्डिंग द एक्साइटमेंट और सरप्राइज. तो यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. अनदर एग्जाम्पल इज स्टॉप हियर, I am just giving you an order, stop here. तो ये आपके exclamation mark के साथ आएगा. ठीक है. So dear students, these are the few rules and regulations that should be in your mind. Keep them in your mind. Okay dear students, now come to page number 12 of your workbook. Learn grammar part 1. Punctuate the following story. Pay special attention to capital letters, question marks and exclamation marks. यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है and these two paragraphs. What you have to do, you have to read them and you have to identify where the punctuation marks are missing, and the main focus should be on your capital letters, question marks and exclamation marks. First, read the story. Sarah had gone to school to collect her report card when she had got good grades this year. In fact, she was at the top of her class. Sarah ran home to tell her parents, "Mummy, Daddy, I have a surprise for you." "What is it?" Sarah asked her mother. "Did you get the highest marks in your class?" asked her father. "Yes," said Sarah excitedly. That evening, when Sarah came to the dining room for dinner, she saw a box wrapped in the gift paper. The card had her name on it. What could it be? Sarah wondered.
When she opened the box, she found a colorful lamp. Surprise! Cried her parents. This is so pretty, thank you, exclaimed Sarah. So my dear ones, this is a story with two paragraphs. You just have to identify the punctuation mistakes. First paragraph जो है वो मैं आपको थोड़ा सा explain करूँगी that what are the little kind of mistakes regarding punctuation here. And the second paragraph will be done by you as a class activity, okay? Okay, dear students, now this is a paragraph number 1 in which there were mistakes and I just have pointed out. So let's discuss it. Sarah had gone to school to collect her report card, full stop, and after full stop we just learned the rule that after full stop we have to write the capital letter of the next word. So capital letter जो है she का S बड़ा होना चाहिए. She had got very good grades this year. Full stop. In fact, she was at the top of her class. In fact का I बड़ा होना चाहिए. Sarah ran home to tell her parents. Full stop. Mummy, comma, Daddy, comma, I have a surprise for you. I have a surprise for you. Full stop. What is it, Sarah? So ये एक question है. What is it? ये क्या है, Sarah? Question mark. Asked her mother. Did you get the highest marks in your class? This is a question 2. उसके फादर क्या पूछ रहे हैं? क्या आपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं? तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है? फुल स्टॉप के बाद यस है. यस का वाई छोटा लिखा हुआ है तो यू जस्ट हैव टू मार्क इट कैपिटल. यस सेड सारा एक्साइटेडली. फुल स्टॉप. ठीक है. So the next paragraph, which is regarding that evening when Sarah came to the dining room, you just have to punctuate it by your own. Okay, as we have just deal with punctuation mark, now we are going to deal with part number 2 of Learn Grammar. It is apostrophe. We have just read this term before. I just gave you a very authentic and a very exaggerated lecture over it. So let's talk about the objective. कि हम लोग इससे क्या सीखने वाले हैं. जब हम apostrophe को कर लेंगे, we will just come to know and come to learn about how to make the possession within the sentence and what are the basic rules of apostrophe. Actually, what apostrophe is? Apostrophe is a kind of punctuation mark which is used to show the possession and the contraction within the sentence of the numbers and letters. Possession मतलब किसी दो चीज़ों के दरमियान में association को show करना. जिस तरह Ali's cycle. Ali's cycle means ये cycle जो है वो किसकी है? अली की है. Doctor's clinic, ये clinic किसका है? डॉक्टर का है. So ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए ये आपको पोजेशन शो कर रही हैं. तो पोजेशन आपको किस तरह पता चल रहा है? बिकॉज देयर इज एन अपॉस्ट्रॉफी एस बिटवीन देम. तो और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कैन नॉट को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है एंड दैट इज कैंट. ठीक है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो अपॉस्ट्रॉफी की जो यूज़ हैं वो इन दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं कि दैट दे आर यूज टू शो द पोजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Okay, now come to part number 2 of page number 12. Farhan has written a composition about his new house, but he has forgotten to use apostrophes. Add apostrophes to his composition. Okay, dear students, it is a very interesting activity. फरहान ने एक कंपोजिशन लिखी है. उस कंपोजिशन के अंदर उसने अपने घर के बारे में बताया है कि उसका घर कैसा है, लेकिन उसके दौरान उसने अपॉस्ट्रॉफी नहीं डाली. ठीक है, तो अब उस अपॉस्ट्रॉफी को हम लोगों ने एडजस्ट करना है. So first 3 to 4 lines will be pronounced and will be done by me, and the rest of the 2 or 3 lines will be done by you. Okay, so let's start reading. Our new house is on Sun Street. It's an old building with brown walls and a white gate. Its doors and windows are also white. My room's on the first floor and my older brother's room is on the ground floor. ठीक है, तो ये जो आपकी लाइंस हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपने इसके अंदर अपॉस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ एडजस्ट करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट लुक एट दिस स्लाइड. इसके ऊपर मैंने जो अपॉस्ट्रॉफी की मिस्टेक्स थी, जहाँ अपॉस्ट्रॉफी इसने नहीं डाली हुई थी, आई जस्ट मेड देम करेक्ट. और न्यू हाउस इज ऑन अ सन स्ट्रीट. इट वॉज अ राइट सेंटेंस. इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग. यू डोंट हैव टू राइट इट. It's apostrophe S. You have to mark apostrophe between it and S. It's an old building with brown walls and a white gate. Its doors and windows are also white. Now my room's on the first floor. My rooms, it is not the plural form of rooms, but it is a possession and a contraction of room. My room, अगर आप rooms को possessive या contractive form में ना लिखें तो ये sentence बनेगा my room is on the first floor.
तो रूम इज को इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और लिख दिया माई रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है. एंड माई older brother's room, similar with the brothers, it is not the plural form but it is a contracted form of brother. Brother is room, ठीक है. Brother's room, it is a kind of possession here. कि किसका रूम है, ब्रदर का रूम है, तो he is just saying my older brother's room is on the ground floor. When we first moved to this house, I didn't like it at all. Didn't, did and apostrophe T. You have to mark apostrophe between did and not. Okay. So these are the 3 or 4 lines of this composition, and the rest of the 2 lines or 3 lines will be done by you. Okay. So Okay, now after there is dealing a with little the note for you apostrophes that and the which I have grammatical written for concept you, of that dear punctuation, students, just there is a keep little one thing note in for your all of mind you. that when you are Dear doing any students, kind just of keep one activity thing in your regarding mind that when punctuation you are or doing any kind apostrophe, of activity try to keep regarding the key points punctuation or and rules in your apostrophe, mind. try to keep the Whenever key you points and are rules in your mind. you are just जब आप dealing key with any points and kind of rules and paragraph regulations in को अपने which mind में there is रखेंगे तो आपके a लिए need कोई of मुश्किल नहीं होगी कि apostrophes आपने or punctuation punctuation कैसे marks, करनी you है just या have apostrophe to किस तरीके से. remind Okay, good and luck. flashback your memory and learn the rules and regulations regarding punctuation and apostrophe. तो ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपके पैराग्राफ्स को सॉल्व करने में, ठीक है.